जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का 7 चैप्टर पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम ये करवा चुका था। ठीक है, और ये चैप्टर है गेटिंग टू नो द प्लांट्स, मतलब प्लांट के बारे में हम लोग को जानने के लिए था। ठीक है, तो पार्ट 1 मैं करवा चुका हूँ और पार्ट 2 यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4 तक शायद हो चुका था। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ से एक्टिविटी 5 से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5, what would require a leaf and split the beaker and test tube burner water a watch glass iodine solution of this activity. Take a leaf, a test tube and pour split of completely immerse in the leaves green. ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है, ग्रीन है, फिर उसके बाद ग्रीन लीफ है और आयोडीन सॉल्यूशन है, परचेज एंड लीफ। व्हाट डज द लीव्स कंटेंट्स। ठीक है, आगे क्या है कि नाउ अ प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ऑफ beaker filled with a water. Heated beaker till all green color from a leaf comes out in the splitter test tube. Get out the leaf carefully and Wash it water placed in a watch glass and pour some iodine solutions over it. 7.1.2 मतलब क्या बोला कि एक पत्ता लेना है, ठीक है, ग्रीन कलर का, और उसको गर्म करके उसमें डाल देना है। ठीक है, और आयोडीन सॉल्यूशंस में उसको डालना है। ठीक है, पर्पल कलर लीफ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वही बताया। आगे क्या है, व्हाट यू ऑब्जर्व द कंपेयर द ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन चैप्टर 2 when you tested a food for a presence of a different nutrients. Does it mean the leaf has a starch in it? Chapter 2 we saw that a slice of potato also show the presence of starch. Potato get starch from the leaves and store it. Leaves prepare their food and presence of a sunlight green color and substance present for the use of water, carbon dioxide and process of photosynthesis. अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, वो क्या करता है, खाना बनाता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट वगैरह पे, एनिमल पे। लेकिन जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, किस सन के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद सन के प्रेजेंस में बनाता है। ठीक है, CO2 or oxygen. Oxygen is given out of a process the food prepared by the fields ultimately days to different parts of the plant. We have seen the stem of activity. Which part of plant is soils? Let us move activity. ये देखो, watering the plant. Plant को क्या है, पानी पटा रहा है, तो उसी के बारे में बताया। Activity would require 2 pots and some soils. खुरपी। ठीक है, खुरपी क्या होता है ना, एक छोटा सा ऐसे स्टेप करेगा, इस टाइप का, ऐसे टाइप का कुछ मिट्टी करने वाला। एन एक्टिविटी टू बी डन ग्रुप 4 and 5. Select the 2 plants and same kind of a plant. Open ground, dig out with root. Take care that they are not big plants. One of the important is cut off the roots from the रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। Look 7.13. Do you think is watering the plant from correctly Paheli and Guzo why? Other plant and plant input B is water them regularly. Observe the plant after a week. Are both plants healthy? Both plants are water regularly, but one without root isn't it. Does it activity help to understand important functions of root? ठीक है, ये रूट क्या है, रूट
ये रूट ठीक है। एक्टिविटी 7 अब एक्टिविटी भी would the required seed of a gram maize cotton and katori boil and some water मतलब two two katoris boil balls place one with cotton them and four three seeds gram one and maize other keep the cotton wet by sprinkling water every day until sprout grown into the young plant. After a week, try to spread the young plant from a cotton. ठीक है ये देखिए क्या है ये चना है ठीक है। चना को फुला के क्या है इसमें से वो रूट्स वगैरह निकाल सकते हैं आप ठीक है। Was it is easy to separate the cotton from the roots by activity 6 we could not pull the plant from the soil right and dug deep. This is because the root is helping hold the plant and firmly growth is anchor the plant of the soil. We have seen there are a different kind of stem and leaves to the root also show a variety of style of activity क्या है 8 ये देखिए root है activity 1.6 7.16 and E and be carefully look at the root of the ground plants we have pulled out from the cotton in the previous activity. Do you look like a root shown in music plant right ground and music in the blank space in the figure after matching the roots in figure? What way are root of gram and maize similarly and what may way are different and there seem to be two different type of roots. They, are they also there the type of roots? Activity go to a facing ground where many wild plants are growing, dig out and wash the soil and of course do you find all them of either kinds of food. 7.1 एक है root का और the root kind of shown main root are called main root को क्या बोला जाता है tap root बोला जाता है and the smaller root are called lateral root. Plants are root shown in 7.1 ये है and do not have a main root. All roots seem similar or this is fibrous root. Separate the plant you have collect into two group A and those have a tap root and group those that have fibrous root at the lips. What kind of venerations do they have? What kind of venerations do you see for the plant of fruit? Do you notice that leaf venerations and type of fruits are plant related in very interesting way? 7.2 we can match the type of leaves and vegetations type all the types of fruits some plants have studied in all activity far. We have learnt that root absorb water and minerals from the soil and stream conduct leaves and other parts of the plant मतलब क्या बोला कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाटर जो रूट होता है रूट क्या करता है वाटर और मिनरल सॉइल से निकालता है ठीक है लेता है एंड द लीव्स प्रिपेयर फूड और लीव्स जो क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं द फूड travels through the stem and stored in different parts of plant. We eat some of these roots like carrot, radish, potato and radish मतलब हम लोग जो रूट खाते हैं क्या कैरेट का मूली का गाजर का ये सब का देखते हैं वो सब रूट ही खाते हैं ठीक है. We also eat many other parts of a plant where food is stored. Do you agree? The stem is like a street with two-way traffic. Right name of material that does up steam and which comes down. In the next sections we will study about the structure of flower. अब क्या है फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं ठीक है. फ्लावर का क्या क्या स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने का मिलेगा ठीक है.
क्या है कि यू आर सोन इन थ्री ब्रांचेज एंड रोज। हम लोग देखे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, एक रोज है, फिर इसमें क्या आ गया, लीफ पत्ता आ गया और फिर इसमें फूल आ गया। ठीक है, तो तीन टाइप का दिखाया है। विच कलर डिड यूज इन फॉर द फ्लावर इन 7 point? Yes. All flowers are colorful. Have you ever seen flower on grass, wheat, maize, and mangoes, guava? Those are brightly colored. Let us study about a few flowers. Activity: we would require one bud and two fresh flowers, each of any of the following: Dautra, China root, mustard, brinjal, lettuce, finger. Also upgrade a glass slides or a sheet of paper, magnifying glass and water. Observing figure 7.20 carefully, look at the prominent parts of the flower. These are a petal. Different flowers have a petal in a different colors. यहाँ देखिए पेटल, ठीक है, ये जो है ना, ये जो इसको पेटल बोला जाता है, और ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, स्पेल्स बोला जाता है। ठीक है, do you think the petals are in the close bud? Which is the most prominent part of bud? Did you see that this part is made of small leaves like a structure? They are called the sepal. Okay. Take a flower and observe a petal and sepals. From the answer to following, how many sepals does it have? They are joined together. What are the color of petal and the sepals? Okay. पेटल ये है, बाहर में बता चुके हैं कि पेटल ये है, एंसेपल ये। ठीक है, हाउ मेनी पेटल्स दस फ्लावर आर द जॉइंट, to the flower with a joint sepal and petals are separated. Fill the table and dishes on the observations. A whole class add observations to this table and fill a trip to locality where there are plants, flowers field. To see inner parts of the flowers clearly, we have cut open and its petals are joined. For example, okra and other bell-shaped flowers, the petals have cut the lengthwise and spread out of a inner part can be seen. Remove the sepals and petals can see other part. The study of 7.22 carefully compare your flower with the leaves and stems and pistil. Stem and pistils. Look at look at 7.23 ये है 7.23 का photo, and it shows the different kind of stems and present different flowers. Can you recognize the two part of the stem in your flower? How many stamens are there in your flowers? Draw a stamens and label its parts of flower. देखिए, parts of flower का ये क्या है, parts है, stem इसको बोलेंगे। एक स्टेम्स है, ये था से येलो कलर में, इसी के बारे में पढ़े थे। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल। इनर मोस्ट पार्ट तो क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल का है, इनर मोस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टिल। इट इज कैन नॉट सी इज कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली नहीं दिखता। रिमूवल बाय मेकिंग स्टेम्स and identify the part of pieces with the help of rule 7.24. Draw a net level diagram. Activity: let us now the study of a structure is ovary. It is the lowermost or bone part of the pistil. We will cut this part to study what is inside. We can figure carefully understand how cut the ovary of the flowers. देखिए ब्लेड है, cut an ovary into different ways shown in figure, and to prevent them from drying, to put a drop of water and each of two pieces of ovary have cut.
Observe the inner part of ovary is 7.26 cm and not plug more flower than need basis on what you need and fill. Answer: do do all flower have sepals and pestal stems and pestal? Are there flowers that do not have one or more these? Are these flowers which have parts and other than? Did you find any flowers which had different between sepal and pestal? Did you find any flowers which number of stem are different from the numbers of? Do you now agree the structure of flowers is not always the same? The number of sepal petals and stem pistils may also be different in different flowers. Some of these parts may even absent at times. We have studied some features and functions of leaf stem, and we study the structure of different flowers. We will learn about the functions of flower in higher classes. We will also learn about the fruits in higher classes. Okay. ये चैप्टर का थोड़ा सा खत्म हो गया, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समय. Plants are usually grouped into parts, shrubs, and trees based on their height, nature, and stem branches. ठीक है, stem bears leaves, flowers, and fruit. Leaf usually has a petiole and lamina. Leaf के पास क्या रहता है? Petiole and lamina रहता है. The pattern venus on leaves is called venetation. It can be reticulate or parallel. Leaves give out of water vapor through the process of transpiration. ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड द प्रोसेस ऑफ जो ग्रीन पौधे लीव्स होते हैं वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के माध्यम से क्या खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल सॉइल से क्या करता है? लेता है, एब्जॉर्ब करता है. ऑल्सो द एंकर प्लांट्स रूट्स आर मेनली टू टाइप, टैप रूट और फाइब्रस रूट. रूट दो टाइप के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. Plants having leaves with a reticulate vegetation have a taproot, while plants having leaves with a parallel vegetation still conduct water from roots. The leaves, parts of the flowers and sepals, petals and pistils. क्वेश्चन आंसर आप लोग कीजिएगा. ठीक है, ये थोड़ा सा और रीड कीजिएगा.